Hello everyone, welcome back to the photography class. This is session 5 and today we will be discussing principles of arts and its application in photography. So let's get going. The topics for today's discussion would be balance, proportion, repetition, contrast, variety, movement, emphasis, and unity. So as I explained in my earlier session that we teach elements and principles of arts to the students of photography so that their observation can get strong. इसी वजह से हम लोग elements को इस तरह समझते हैं कि जैसे कि एक building blocks होते हैं किसी wall के. For example, if someone asks you to construct a wall, तो उसके लिए जो elements required होंगे वो such as bricks, cement, water, sand, all these things are elements, raw materials to compose or construct that wall. Similarly, elements of arts are used to construct that piece of art. Principles of arts are those set of rules through which you arrange and modify and decorate these elements. उन rules के accordingly आप जो art create करते हैं वो aesthetically appealing लगती है to the viewer's eye. So this is the reason why we study principles of arts and its applications in photography. Balance is the first principle of arts. So balance basically explains the balance of your composition. All these principles are directly related to your composition. And this is the reason why we're studying all these principles. So the first type of balance is symmetric balance. Symmetric balance is the composition in which जो frame है आपका photographer का उसमें if you draw a line, vertical line through the center of your frame तो right पे और left पे जितने भी number of elements होंगे वो completely equal होंगे. They would look similar, they would look mirror to each other. For example, in the first photograph which you see जिसमें ताज महल की एक picture है, the photographer has taken the picture exactly in a way कि वो symmetric balance लगता है. अगर आप एक vertical line draw करेंगे center से तो left और right के elements आपको equal लगेंगे, mirror लगेंगे, visually balance लगेंगे. The second type of balance is called asymmetric balance. This is opposite to symmetric balance. Asymmetric balance में if you draw a vertical line in the center of the frame तो left side के elements और right side के elements unequal लगेंगे. So this kind of a balance is called asymmetric balance. So the second photograph which you see is again of Taj Mahal and picture वही है, Taj Mahal वही है, subject आपका वही है, but photographer ने थोड़ा सा asymmetric picture लेने के लिए off center किया अपने frame को. तो अगर अब आप देखें तो left और right पे जो virtual line अगर एक draw करें left और right पे elements unequal लगेंगे. This kind of balance is called asymmetric balance. The third type of balance is called radial balance. Radial balance is basically used for circular compositions, such as flower is a circular composition. Or if you are shooting architectural elements जो कि circular looking है, या फिर छत पे आपके fan जो है roof fan वो circular है. Or for example you're shooting a fountain और वो circular जो है shape का है. तो radial balance is used for circular compositions, for shooting and capturing circular looking objects or subjects. तो circular balance जो होता है radial balance basically वो उसमें अगर आप एक center में virtually एक line draw करेंगे exact center of the frame and horizontal line भी अगर आप draw करें तो चारों जो components बनेंगे frame के वो चारों equal होंगे. So it's kind of a mirror composition from everywhere. So this kind of balance is called radial balance. So in photography, as a photographer, you should understand these types of balance to compose your frames. इसमें कुछ गलत या सही नहीं है. Symmetric balance कुछ photographers का style बन जाता है. कुछ photographers asymmetric balance पे काम करते हैं. उनका signature style बन जाता है. So I want you guys to explore all these three types of balances in your photography.
Proportion is the second principle of art. Proportion basically explains the relationship between two objects or two subjects. There has to be two things in order to explain proportion. अब वो जो relationship है दो subjects के बीच में, वो in terms of size हो सकता है, in terms of distance हो सकता है. So for example, the picture which you see right now, you see a man walking on a path, on a road, जो कि एक कच्चा रोड है, और वो that person is moving towards the center of the frame, जहां पर एक छोटा सा घर है. So this means that house is somewhere far away and the person is somewhere closer to the photographer. But that doesn't mean कि जो घर है वो इतना छोटा है या वो इसी साइज का है जैसे साइज का इंसान है. So that is basically proportion of the house and the man. So when things are closer to you as a photographer, they look big. When things are far away from you, they look small. So this explains the size of this explains the relationship of proportion in terms of distance. Now the relationship of objects or subjects in terms of size. तो साइज में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू बॉल्स. फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ टेनिस बॉल एंड यू हैव अ बास्केटबॉल. दे बोथ आर सर्कुलर लुकिंग शेप्स. दे बोथ आर स्फीयर्स इन टर्म्स ऑफ फॉर्म. बट इफ यू प्लेस देम राइट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो एक बड़ा लग रहा है एक छोटा लग रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर साइज. तो सिमिलरली प्रोपोर्शन ऑल्सो एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप ऑफ टू subjects or objects in terms of size. So as a photographer, you should have a keen eye and you should apply the principle of proportion in your photographs. इसकी बहुत examples होती हैं. For example, you have seen a lot of images on internet or Facebook or Instagram, जिसमें किसी इंसान ने ऐसे करके किसी एक composition है जिसमें सूरज या चांद उसको पकड़ा हुआ है. So that doesn't mean sun or moon is right in his hand right that time. But ये principle of proportion को explain करता है. So the third principle is repetition. Repetition basically explains similar element repeating in your composition periodically. अब वो element line भी हो सकता है, shape भी हो सकता है, form भी हो सकता है, color भी हो सकता है. एक ही element periodically repeat हो रहा हो आपकी composition में, that explains the principles of repetition. So as a photographer, your composition can have repetition in it and it looks very nice. For example, you're shooting a bunch of flowers और वो सारे flower एक जैसे हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, they look similar. So that explains the principles of repetition. Or you're shooting a zebra cross on the street, उसमें vertical lines या horizontal lines repeat हो रही हैं. Or you're shooting a staircase जो कि ऊपर जा रहा है and you see a lot of horizontal lines. So the principle of repetition is used in photography in terms of developing a composition in a way photographer wants the viewers to see their photograph. So the next principle is contrast. The principle of contrast basically explains the relationship or the difference between two colors in the color wheel. For example, when you see a color wheel in front of you, तो उसमें तीन टाइप के कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू, येलो. These three colors are called primary colors. इन तीन कलर से सारे कलर्स बनते हैं. सेकेंडरी कलर्स होते हैं ऑरेंज, ग्रीन एंड पर्पल. तो कलर व्हील में जो कलर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, दोज कलर्स क्रिएट कॉन्ट्रास्ट इन योर कॉम्पोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, रेड के कंप्लीटली ऑपोजिट कलर व्हील में होता है ग्रीन, येलो के कंप्लीटली ऑपोजिट होता है पर्पल, और ब्लू के कंप्लीटली ऑपोजिट होता है ऑरेंज. ये तो बात हो गई कलर व्हील की, कॉन्ट्रास्ट की. सिमिलरली ग्रे स्केल में भी तो कॉन्ट्रास्ट होता है. तो ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट हो गया व्हाइट. सो चार टाइप के आपने कॉन्ट्रास्ट समझे अभी इस वक्त. ब्लू का कॉन्ट्रास्ट है ऑरेंज, रेड का कॉन्ट्रास्ट है ग्रीन, येलो का कॉन्ट्रास्ट है पर्पल,
और ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट है व्हाइट. सो एज ए फोटोग्राफर यू शुड अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट एंड अप्लाई दैट इन योर फोटोग्राफी. सो लेट सपोज आप रेड एंड ग्रीन का कॉन्ट्रास्ट अपने फोटोग्राफ में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यू हैव टू फाइंड सच कॉम्पोजिशन अराउंड यू जहां पर ग्रीन बैकग्राउंड हो या ग्रीनरी हो. फॉर एग्जाम्पल यू गो टू अ पार्क, वहां पर ग्रीनरी है आसपास, एंड यू फाइंड अ रेड फ्लावर, रेड रोज समवेयर, एंड यू टेक अ क्लोज शॉट ऑफ इट. तो बैकग्राउंड में ग्रीनरी आपको नजर आएगी एंड फ्रंट में फोरग्राउंड में सब्जेक्ट आपका रेड रोज हो जाएगा. So in that case, as a photographer, you're expressing the principle of contrast and you are expressing the combination of red and green. इसी तरह स्टूडेंट्स येलो और पर्पल को भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपनी फोटोग्राफी में, और ब्लू एंड ऑरेंज को भी किया जाता है. सिमिलरली ग्रे स्केल में ब्लैक एंड व्हाइट को भी प्रैक्टिस करना in terms of principle of contrast is very important.